Hello students, hope you all well. So let's begin the class of today. So in the previous class we learned about how to make introductions. Now if you don't know how to make introduction, it is very difficult to make you understand today's chapter, that how to create body paragraph. Body paragraph is based completely on introduction. So it is must that if you are new user, I advise you first you listen first chapter, that is how to make introduction, right? So let's begin today how to create body paragraph, right? You must watch screen when I deliver whole essay. You must concentrate on the screen here. How to make body paragraph structure agree and disagree type, means किस तरीके से बनाने हैं. Of course first you must understand that 90 to 100 words are required in one BP paragraph and 90 words that is required in a BP second paragraph. First is understand that what is body paragraph. Means we write what in body paragraph, हम लिखते क्या हैं. जो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मेन आइडिया दिया, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, we write about the explanation of that first point. Now what are those 4 steps that is in front of you? You can say सबसे पहले आपको अपना मेन आइडिया जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर दिया था और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको डिफाइन करेंगे अच्छे से 10 to 15 वर्ड्स के अंदर, राइट? अब जो मेन आइडिया दिया, whatsoever your main idea is, you write explanation of that main idea in 40 or 50 words. Now when you are writing your explanation, all reasoning is required. Means when you are writing your explanation, do not use fan voice. Fan voice means do not connect your essay with for, and, nor, but, or, yet, or so. So when you are writing your paragraph, your answer must be explained properly with a complex sentence, like connected with because, connected with while, connected with as, due to, so that, like this. Now next one is example of main idea. जो आपने, whatever the points you have explained, you must give an example. If you are missing this example, of course marks will be deducted. So keep care about the things. About the last one is result. Whatever have you explained, now give the result in 10 to 15 words. Means follow these 4 steps. Nobody can deduct your marks if your steps are followed in this way. Now this makes your organization of your body paragraph perfectly also. Your task response is okay, your organization is okay. Of course, rest of the 2 parts are there, lexical resource and that is vocabulary, and grammar part, that is your practice. But if you are following these 4 steps, it would be easy for you to understand. In another word, I just explain you in other words also. फिर मेन आइडिया समझा रहा हूं. आपने घर बनाना है, आप घर बनाना है, what is that? That is called title. आप आर्किटेक्ट के पास गए, उसको कहते हैं घर बनाना है, टाइटल बताया आपने, that's fine. अब वो पूछेगा आपसे किस तरह का घर बनाना है आपको, आप मेन आइडिया दोगे, आप कहोगे मुझे बड़ा सुंदर सा और स्वीट सा घर बनाना है. ये क्या बन गया आपका मेन आइडिया, राइट? फिर आपसे पूछेगा उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्सप्लेन करो कि स्वीट होम क्या है और ब्यूटीफुल होम क्या है. तो आप एक्सप्लेन करोगे कि मुझे इस तरह का कमरा चाहिए, इस तरह से डेकोरेट होना चाहिए, इस तरह से थीम होनी चाहिए. मीन्स what you explain, what, how, why, when. So this is how you are explaining your home. Okay, फिर आप एग्जाम्पल देंगे. क्या एग्जाम्पल देंगे? उसका घर है ऐसे, इस तरह का घर चाहिए, ये देखिए फोटोग्राफ. So what you are doing? You are giving an example to an architect. फिर at last क्या होगा? Result. अब आप पूछते हैं कि अच्छा आपको इतने रिक्वायरमेंट्स इतने में इसलिए चाहिए. So this is what? Result. So इसलिए it is must to understand what is main idea. अगर आपको ये चीज समझ आ गई मेन आइडिया और उसको डिफाइन कैसे करना है मेन आइडिया को, you can never miss your chance to get back. And most of the students they keep miss this time. उन वो स्टार्ट ही करते हैं, टू बिगिन स्टार्ट करें, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. बिगिन विद से स्टार्ट करेंगे, कमेंट्स विद से स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइन बनानी शुरू कर देंगे और लाइन बनाते हुए ये नहीं सोचते
is their main idea correct or not? So this is the first pattern that you follow. Now let's we move to the next slide. Hope you have got it कि मुझे मेन आइडिया क्या मतलब, एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब, एग्जाम्पल का क्या मतलब, रिजल्ट का क्या मतलब. बी श्योर अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि आपने मेन आइडिया एक्सप्लेन किया, ऊपर 2 लाइनों के अंदर एग्जाम्पल दे दिया. बी श्योर अबाउट इट. डू नॉट गिव एग्जाम्पल ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज. एक्सप्लेनेशन इज मस्ट. आप एक पॉइंट को कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, द लेंदी एक्सप्लेनेशन दैट इज रिक्वायर्ड. आप कितने पॉइंट्स डालते हैं डजंट मैटर एट ऑल, बट योर फर्स्ट पॉइंट must be explained very finely. That means a lot, right? So this is an. Now let's we talk about it. In previous video the question was, उसी के ऊपर ही बात करूंगा. The previous video when I made you understand one question, spoken communication is more powerful than written communication. उसकी मैंने एक वीडियो आपको बना के दी थी पहले. आज उसी की इंट्रोडक्शन है. अब उसकी इंट्रोडक्शन ये दी हुई है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. I just make you understand now. Now what is the main idea? हमने thesis statement बनाई थी. ये thesis statement है. In my humble opinion, verbal interaction is regarded useful as it reaches to many people in less time. ये मेरा एक main idea है, मेरा topic sentence है. इस topic sentence को मैं define करूंगा अपनी body paragraph के अंदर, right? And reveals more expression of the speaker. अब ये expression of the speaker मैं कहाँ explain करूंगा? BP2 के अंदर. It means I first pick up one main idea. उसको मैंने डिफाइन किया बीपी पैराग्राफ के अंदर, राइट. फिर उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन करूंगा, फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद रिजल्ट. देखिएगा कैसे. नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड. ये बीपी पैराग्राफ 1 है. इन लेस टाइम. दिस इज व्हाट, दिस इज माय टॉपिक सेंटेंस. अब इस टॉपिक सेंटेंस को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा जो मेरा मेन आइडिया को एक्सप्लेन करेगा. नाउ व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? लाइक दिस. आपने किसी तरह भी स्टार्ट किया, लाइक एडमिटेडली स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट इट बाय अनदर फ्रेजेस. इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सेव्स द टाइम ऑफ द स्पीकर और कम्युनिकेटर. मींस अगर आप इस चीज को इस तरह से लिखते हैं, इन लेस टाइम, आप उसको अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं अपने मेन आइडिया को. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मेन आइडिया ऑफ बीपी पैराग्राफ 1. अब किस तरह से टाइम सेव होता है स्पीकर का, how the time of the speaker is saved, that you write reasoning while explaining must use connector. जैसे आपको मैंने बताया, अभी सुना होगा आपने कि आपको because के साथ explanation करनी है, आपको although के साथ करनी है, as, due to, इस तरह के आप जोड़कर sentences reasoning बनाएं proper. Now third step is आपको example देना. जैसे कि for example it is written here to take a case of an interviewer and interviewing where both are saving time. इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. सो मीन्स सेविंग टाइम के ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल दिया है. बी श्योर अबाउट इट. डू नॉट गिव एनी irrelevant example. Your example must be related to the reason and reason must be related to the main idea. So this is how the 3 steps have been solved. Fourth step कैसे है? अब मैं लास्ट में क्या करूंगा? Hence verbal communication is a concrete bridge in professional, social and personal life. Right? Here you put up the comma. Means last में मैंने क्या कहा, रिजल्ट क्या दिया, मैंने उसके एडवांटेजेस बताई और लास्ट में आगे बताया कि इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन है एक कॉन्क्रीट ब्रिज है इन प्रोफेशनल, सोशल एंड पर्सनल लाइफ. सो इफ यू आर मेकिंग दीज 4 स्टेप इन दिस वे, so this is the way of making body paragraph. Now I have not written the answer of reasoning. वो मैं किसी और वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे रीजंस कैसे देने चाहिए. So today I just, my motive is to make you understand the steps. लिखना कैसे है, मेन आइडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए और 4 स्टेप कैसे होने चाहिए. This I have made you understood. अब इसी तरह का मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, या आप ऐसे करते हैं. बीपी 1 पैराग्राफ है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज 1 बीपी पैराग्राफ. नाउ व्हाट वी डू, इसके बाद हम बीपी 2 पैराग्राफ भी करेंगे. बीपी 2 पैराग्राफ के अंदर मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद इस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली वो जो सेकंड पॉइंट है मोर एक्सप्रेशंस, आप उसको इस 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आज आप लिखेंगे. सो टुडे यू आर सपोज्ड टू राइट. आप उसको लिखने के बाद कमेंट कर दें. आई विल चेक इट. आप बीपी 1 को लिख दें या बीपी 2 को लिख दें, योर चॉइस. आप कमेंट करें,
आराम से पूरे वीडियो देखने के बाद आराम से 10, 15 मिनट, 20 मिनट लगेंगे आपको. राइट योर पैराग्राफ. आई एम वेटिंग फॉर यू. आप कमेंट करें. Thereafter, in next 1 hour, I will check your comments and send you the answer like in the previous video, right? So now see, BP2 means what? Reveals more expression. Reveals more expressions means ये second point हमारा जो BP2 में express करना है. How does it reveal? आपको पहला step करना है, दूसरा step, तीसरा step, fourth step. ये 4 steps आपको अच्छे से खुद बनाने हैं. So ये 4 steps जब आप खुद बना दें, you send me complete BP1, BP2, you send one BP, you send any BP2 so that your writing can be checked. आप BP1 बनाएं, BP2 बना के भेज दें, your choice. I do not force anyone, right? Hope it is clear to you. अब, what is the next thing? What I want to say you, from the very first stage to last, आपने introduction सीखी, BP1 सीखा, BP2. अगर आपको ये एग्री डिसएग्री को BP1, BP2 क्लियर हो गया अच्छे से कंसेप्ट, these are the concept for every type of question. And if you are unable to understand, I advise you watch again at least twice or thrice so that you can understand my all 4 steps. Thereafter you start writing. So of course don't worry, you fall while writing. आपको नहीं आएगा लिखना, but try something that helps you to get your motivation also when I check your copies. So आपके comments जब मैं check करूंगा, आपके वो comments आपको जो ठीक करके दूंगा, आपको confidence मिलेगा. But do not, I advise you, being a student, I advise you, do not only listen, do the things, right? So I'm waiting for your BP1 or BP2 or both now, right? Understand. Thank you. अब अगली बात ये लिखेंगे आप, I help you in short. See, this is a template. BP1 template है BP1 का. अगर आप इस template को यूज करते हैं, that can help you to write. What is that template? Without a shadow of any doubt, आप यहां से लाइन शुरू कर सकते हैं. First point क्या लिखना है? As I told you, main idea को define करना है, उसको explain करना है. See, I've written explanation means you are supposed to write explanation. अब explanation लिखते हुए देखिए words also, because, even, so that, इनके साथ connect करके अपनी पूरी explanation बनाएं. ये dot 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 means it is your own word that you write it over here itself. जब आपने ये पूरी explanation और main idea लिख दिया, then what is the way of writing example? To take a case या to exemplify the statement करके आप अपनी example शुरू कर सकते हैं. And this is way. If you feel you have another point to explain, then you write furthermore, otherwise there is no need. If you feel that your words are 80 here, do not write any other point because you have explained first point minutely. Last, result देना है, आप hence word use कर सकते हैं, आप hence word use कर सकते हैं, आप does word use कर सकते हैं. So it is your choice. Right? This is how template that you can use so that you can beautify your essay with these connectors, with these words. So this with these all result phrases. Hope that you have liked this video. Do not miss to write your BP1 and BP2. Waiting for you. Take care. Bye-bye.